Hello and welcome to MOOC on Professional Communication Skills. This is Module 2 of the series titled Job Interview Skills, and we are now on Unit 3 of this module titled Start Off Well Acing Common Questions. My name is Ritik Garg and I will be your instructor for this particular unit. जैसा कि आप टाइटल से समझ गए होंगे, हम इस पर्टिकुलर यूनिट में बात करेंगे उन कॉमन क्वेश्चंस की जो एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिनसे हमें एक इंटरव्यू की शुरुआत करनी है, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। सो लेट्स बिगिन। अगर हम एज अ कैंडिडेट इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वैसे ही जो एम्प्लॉयर हमारा इंटरव्यू ले रहा है उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है। वो हमसे क्या चाह रहा है? What is the employer looking in us? They are looking for our experience, our past achievements. क्या हम इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? Do we know about the company and the job profile? क्या हमारे अंदर मोटिवेशन और कमिटमेंट है उस जॉब के लिए? Do we have the ability to fulfill specific job requirements? क्या हमें नई चीजें लर्न करने की अर्ज है, काबिलियत है? They are also looking at our all-round intelligence. क्या हमारे अंदर वो बुद्धि है जिसकी उन्हें इस जॉब में जरूरत हो? बहुत जरूरी, they are looking for our communication skills. इंटरव्यू में ये भी देखा जा रहा है। And they are also looking at our initiative prowess and self-reliance. हम कितना आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं और कितने सेल्फ रिलायंट हैं। इससे हम आगे बढ़ते हैं कि ये सब जानने के लिए वो हमसे क्या पूछ सकते हैं। टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस में होता क्या क्या है? टिपिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस में सबसे पहला है क्वेश्चन आपके ऊपर, अबाउट योरसेल्फ, इन विच फर्स्ट क्वेश्चन एज वी नो इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इन विच द इंटरव्यूअर विल आस्क यू टू ब्रिंग देम अप टू डेट विद योर ओन रेज्यूमे। जो चीजें आपने अपने रेज्यूमे में लिखी हैं उनसे उनको दिखाना है कि वही इंसान आप हैं, और भी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं आप उसको थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं, उसको थोड़ा एकेडमिक बना सकते हैं, बट रिज्यूमे में जो लिखा है वैसा ही आपको बताना है अपने आप को। सेकंड, दे आर लुकिंग फॉर योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। क्या इस कैंडिडेट के पास जॉब के लिए वो स्किल्स हैं? आपने अपने रिज्यूमे में अगर कोई क्वालिफिकेशन का मेंशन किया है तो आपने वो क्वालिफिकेशन करी क्यों, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। What would you consider your major achievements? This is again a question they can ask you. They can also ask you questions related to your work experience in the past life, if you have. For example, what experience have you had that is relevant to this particular job that you've applied for? Do previous job prepare candidates for this position? क्या ऐसा हुआ आपके केस में या नहीं? करियर गोल्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है यूजुअली इंटरव्यूज में। What are your expectations from this job? And what ambitions do you have as a candidate for this job? इस जॉब में आने के बाद आपकी ambitions क्या है, आपको लॉन्ग टर्म में करना क्या है? पर्सनल ट्रेट्स के बारे में पूछा जाता है, सिर्फ क्वालिफिकेशंस के रिज्यूमे पे लिमिट नहीं करेंगे, वो आपके एटीट्यूड के बारे में ही पूछ सकते हैं। What is the candidate's attitude? अबाउट द कैंडिडेट से अब हम आ रहे हैं अबाउट द जॉब पे। जॉब से रिलेटेड व्हाट ऑल आर द थिंग्स that the interviewer can ask you. They can ask, what interests you about this job? Why did you choose this job? What and how well do you know about this organization or the company that you have applied for? What other options are you considering alongside this job? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका जवाब डायरेक्टली नहीं देना है, इनडायरेक्टली देना है। फॉर एग्जाम्पल, what other options are you choosing, considering? I'm considering a job that improves my skills and helps me become the person that I want to be 5 years down the line. That can be an answer. They can ask you, how do you see your career developing in coming 5 to 10 years? Job prospects के बारे में पूछ रहे हैं वो आपसे। जनरल क्वेश्चन से पूछ सकते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल जो जॉब से रिलेटेड ना हो।
What do you think of the government's policy on college fees? Or what are your views on the current pace of economic growth in our country? आपको इनके आंसर्स शॉर्ट रखने हैं. Try to connect them to your job as well. For example, the career prospects are limited, but they are growing in the field that I am applying the job. यहां से हम आते हैं टाइप्स. कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं, हमें कंसीडर करना होगा इन सब चीजों को. फर्स्ट इज प्राइमरी. प्राइमरी क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड फैक्चुअल क्वेश्चंस, एकदम डायरेक्ट जो आपसे पूछा जाता है, जिसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है. यू नो इट एंड देयरफॉर यू आर गोइंग टू से दैट. इसका एग्जांपल क्या है? डिस्क्राइब सम एक्सपीरियंसेस दैट पोर्ट्रे योर लीडरशिप स्किल्स. सिंपल क्वेश्चंस हैं. अगर आपने पहले कुछ कर रखा है तो आप उसका जवाब देंगे, नहीं कर रखा है तो आप नहीं दे पाएंगे. Second type is secondary types of questions. They're closed, they're based on a situation and at times hypothetical. Real नहीं है लेकिन एक situation है जो आपको बनानी है. अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? Example, you said you welcome challenges. If the chance arose of an economic downturn, would you be interested in handling the next round of layoffs? अब ये हाइपोथेटिकल है कि अगर आपका ले ऑफ हो जाएगा तो क्या आप उसको हैंडल कर पाएंगे? इसका आंसर आप क्या देंगे? ये नहीं कि नहीं कर पाऊंगा, आप ये आंसर देंगे that I will be handling that situation very well because I know my skills will protect me in the next layoff as well. Third type is leading questions. वो क्वेश्चन जो आपकी इंटरव्यू में डिस्कशन को लीड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे और क्वेश्चंस आगे बनते हैं, डिस्कशन आगे जाता है. इसके लिए आपको एंटिसिपेट करना है कि इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है. एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. Will you consider switching this job as soon as you find another job with better pay grade? आपका आंसर ये नहीं होगा कि yes obviously और no not at all. आपका आंसर होना चाहिए something like I believe in keeping my commitments and for the same reason I would put in all my efforts to work for the growth of this company and gain experience in this job. ताकि कंपनी को भी ये सांत्वना मिले कि आप उस कंपनी में रहना चाहते हैं. Next type is informational, where they are asking for an information from you. If you can provide the information, good enough. This is done to check your knowledge of the terms related to the job, your previous duties in the last job, or facts at times about the job. What have you learned in the previous job? What do you like or dislike about current ecosystem in the job environment that you work in? What working environment works best for you? वो कौन सा तरीका है जिसमें आप सबसे बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं? आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये. आपकी 3 स्ट्रेंथ्स और 5 स्ट्रेंथ्स आपको पता होनी चाहिए. आपकी वो 3 वीकनेसेस पता होनी चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हैं और करेंगे आगे. फिफ्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने अपनी लास्ट यूनिट में भी इसके बारे में बात करी थी, बिहेवियरल क्वेश्चंस. सिचुएशनल होते हैं अपने नेचर के अंदर. आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और आपको बताना होगा कि आपने उसमें कैसे बिहेव किया, क्या रिजल्ट था. रियल लाइफ एग्जांपल से. The interviewer asks you to give examples of situations you have faced and how you responded to check how well you will fit in the new job. We also need to consider these things while answering. हमें पता चल चुका है कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं जैसे पूछे जा सकते हैं. Now we need to know how and what we need to be doing in order to answer those questions. What are those prerequisites of answering the questions? We always need to be honest and truthful about our answers. We need to listen carefully what the question is and seek some clarification अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन के बारे में. We always need to emphasize on the positive aspects of our answers, not on the negative. Impression is a very important thing, obviously. Keep your answers brief and specific. हमने लास्ट यूनिट में भी बात करी थी. अपने आंसर्स को शॉर्ट रखना है, क्लियर रखना है. Keep them clear and smile always while answering. Do not hesitate. Do not panic. Always show your enthusiasm and dedication for the job you are seeking. And always be open to constructive criticism. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बुरा लग जाए उनकी बात का
तो आप वहां स्माइल करना बंद कर देंगे? नहीं। गिव एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स टू प्रूव योर पॉइंट्स ऑलवेज। बिहेवियरल क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली एंड इन जनरल सभी क्वेश्चंस के अंदर आप एग्जाम्पल देंगे, एनेक्डोट देंगे अपनी पास्ट लाइफ से, तो वो प्रूव करेगा कि आप इंटरेस्टेड भी हैं और आप आसपास देखते हैं, समझते हैं चीजों को। नो व्हाट यू वांट टू से एंड फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी टू से इट। Just because you know something in your mind doesn't mean you have to speak it at that time. Always know where to speak, what to speak, and always have answers to your own questions. अगर आपने एंड में इंटरव्यू की कोई क्वेश्चन पूछा है तो एक आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ा था और मैंने पूछ दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कुछ देखे हैं अभी पहले, और हमें क्या क्या उन बातों का ध्यान रखना है जब हम इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, हमारे एक्सपीरियंसेस, द अकम्प्लिशमेंट्स वी हैड इन आवर पास्ट लाइफ, द स्किल्स वी हैव गैदर्ड इन आवर लाइफ थ्रू आउट, द गोल्स दैट वी वैल्यू एंड द वैल्यूज एंड एथिक्स दैट वी हैव एज अ इंडिविजुअल। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना है एंड वी नीड टू प्रिपेयर टू बैक देम ऑफ। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर हम कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो उस पर वर्क करना है, अगर हम एग्जाम्पल्स देने में अच्छे हैं उस पर काम करना है, और अगर हमारी टेक्निकल साइड अच्छी है तो हमें उस पर भी काम करना है। प्रिपेयर स्टॉक रिस्पॉन्सेज टू कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऑलवेज एंड ऑलवेज डू दैट। नेवर फॉरगेट that you need to have some response to everything which is being asked of you. आपके रिस्पॉन्सेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए? आपकी स्ट्रेंथ्स, आप कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, आप कैसे डिसीजंस लेंगे कंपनी में अगर आपको जॉब मिलती है, आपकी प्रायोरिटीज और गोल्स क्या हैं जो आप सेट करना चाहते हैं, आपने कैसे काम करना है विद अ टीम एज अ टीम मेंबर, और नॉट जस्ट अ लीड बट एज अ junior team member as well. How can you plan and organize your work and the responsibilities that have been given to you? You need to prepare to show strengths by means of self assessment. मैंने ये सब कुछ किया और उससे मैंने ये सीखा, that is my strength. Organize your answer before you start to talk, जो हमने लास्ट स्लाइड में बात करी है। Pause, think over it and then speak. Just don't start running away with the answer. For this there is a simple trick. Talking points होने चाहिए effective answers के लिए। Talking points mean these are the points on the basis of which I will be forming the answers. These are like dots. If you connect them, you will form an answer. Talking points are like sound bites of information you want the interviewer to know. वो key points, वो underlined points जो हम आंसर शीट में लिखा करते थे स्कूल या कॉलेज में, वो underlined चीजें talking points हैं जो हमें दिखाना ही दिखाना है। In an ideal interview, each person will speak about over and around 50% and listen the other half, चाहे वो interviewer हो या interviewee हो। It is best not to speak at any one period for over 2 minutes. 2 मिनट से ज्यादा आपका आंसर लंबा होना ही नहीं चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे रुकना कहाँ है। उसके लिए आई कांटेक्ट भी बहुत जरूरी है इंटरव्यू से, इंटरव्यूअर्स से, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मेरे टॉकिंग पॉइंट्स मेंशन हो गए हैं या नहीं। You need to memorize your talking points and bring them into the conversation when appropriate. Always remember when to bring it. Some of the talking points can be used while responding to questions and others can be expressed at the end of the interview. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक पॉइंट्स रह जाते हैं जो आप पूछना चाहते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पाते हैं या बता नहीं पाते हैं। Keep them reserved at the end. You might be able to ask them later on when वो आपसे किसी क्वेरी के बारे में पूछे। These are two things that you always need to match: the skills that the employer is seeking and the requirements which are the evidences as a candidate you will provide. So please focus on matching them. For example, communication के बारे में अगर वो पूछ रहे हैं, so how are you going to tell them? Through a presentation you made to a group or a meeting, उसका example देकर। If they're asking you about a skill that is teamwork, team building, working in a team, you will tell how you worked in cooperative work groups, example from your past job. If they're asking you about leadership skills again, you will tell what positions you held before and how you worked under them. If they told
you to tell about some initiatives you took. You will tell about things like fundraising that you had in your previous job or life, social campaigns that you led or were part of. कमर्शियल अवेयरनेस की कई जॉब्स में बात करते हैं कि हाउ कमर्शियली वेल अवेयर आर यू इन दैट यू नीड टू टेल दैट यू हैव how you will tell them through your search of their business pages, their LinkedIn profiles, their website, your social media presence, their presence, all of these things. Information technology is a very, you know, thing which on which everything works now. So you cannot forget it. You will be telling about your skills, your expertise in this particular field as well, through all that you designed maybe, or your certification courses that you did, and what did you acquire out of it. Tips to remember. There are a few tips that you always need to remember if you're going for an interview. Interview is a two-way process. Never give yes or no answers. आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. For example, did you learn some skills in your past job? Your answer should not be yes, I learned. No. आपका आंसर होना चाहिए I learned quite a few skills in my past job. Prominently, these are the few skills that helped me go through the job and grew me as a professional. Then mention those 2-3 skills that you acquired as a part of that job. The interview begins the minute you step into the company lot. कंपनी लॉट में आते ही जैसे ही आपको पता चला कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, यू आर बीइंग जज्ड एट एवरी टाइम. फोन कॉल से ही शुरू हो रहा है कि आप कैसे इंडिविजुअल हैं. थिंक लाइक एन एम्प्लॉयर. इसीलिए मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था व्हाट डज द एम्प्लॉयर वांट. अगर हमें यही नहीं पता होगा देन हाउ आर वी गोइंग टू टेल देम व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. डोंट क्रिटिसाइज पास्ट एम्प्लॉयर्स एंड कोवर्कर्स. हमें हमेशा अपने एथिक्स के ऊपर ध्यान देना है. If we are going into one job, that does not mean we are going to ridicule our past job. If we are going into another ecosystem, does not mean that we are going to say bad things about our last employer, last colleagues. They are a part of our life. We have learned from them. Good or bad is different, but do not criticize them openly because you can also be there one day. We also need to be aware of illegal questions. At times, they ask you about maybe your caste and things like this. You need to be aware and knowing how to tackle them. Not being rude, but being polite is the key to that. You need to maintain professionalism even if the employer does not. अगर सामने से क्वेश्चंस रूडली आ रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि आप भी रूडली आंसर करेंगे. नहीं, they may be checking you at times, but you need to be, you know, on your knees that yes, this is me as a person, as a professional. Be prepared for the unexpected. At times कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं miscellaneous, जैसे हम बचपन में बोला करते थे. Always be prepared for them. हमने बात करी है कुछ क्वेश्चंस के बारे में. We will talk about them a few more in the coming slides. And always be aware of body language. That also makes a lot of difference. Their impression is undoubtedly great there. Always be aware of creating a bad impression. हमें कभी भी ऐसा नहीं दिखाना कि we are not requiring this job. हमारा poor personal appearance can do that. We need not have negative attitude. There should not be lack of interest and enthusiasm while we are appearing for an interview. Preparation हमेशा अच्छी होनी चाहिए हमारी. We should never have poor knowledge of our role. We need to research properly. We need to work on our failures that you have normally in giving examples. Start technique, working on 4 R's जो हमने last unit में बात करी थी. Work on them. We need to never overemphasize on money and rewards. We need to look for the opportunities, not for the money. We should always have a career plan. Its lack can really cost us our job. With this, we come to some typical interview questions जिसकी practice आपको करनी है. I am providing you with the questions. I have provided you with the framework on how to work on them. And there's a simple way you can do that. Think about and record your responses to the following questions. Then revise your answers. या तो इनको लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए. इनको बाद में सुने या पढ़ें और रिवाइज. Can you tell me something about yourself? What are your strengths and weaknesses?
How well do you work under pressure? What are your salary expectations? वही जो हमने बोला था, never ask it directly, but if they ask you, you need to have an answer. How well do you work with others? आपकी लीडरशिप, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके टीम स्किल्स, इन सब के बारे में बात करनी है आपको इनमें. What were your biggest accomplishments in your last job? Looking at the positives of your last job, not the negatives. What is the tough problem you solved on the job and how did you do it? This is the behavioral question using the STAR technique: situation, task, the action that you took, and the result that you got. 20, 60, and 20% your time should go into them. Why do you want to work here? The company will ask you कि आपकी जॉब से क्या expectations हैं. What is the most difficult situation you ever faced? Can we check your references? Very important. Always keep a check with the references you're giving. उन लोगों के बारे में जिनका नाम आपने दिया है कि उनसे कंफर्म कर सकते हैं आपके बारे में. उन 3 या 4 लोगों से जो आपके मेंटर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपका एक्स एम्प्लॉयर हो सकता है, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहें. उन्हें बताएं कि हमने इस जॉब के लिए अपियर किया है. अगर कोई कॉल या इन्फॉर्मेशन आती है, प्लीज रिप्लाई पॉजिटिवली. And as I say, no failures to fear, just lessons to learn. डरना नहीं है, हमेशा सीखना है. Thank you.